कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का हथियार है, मगर इंस्टीट्यूशन के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। जय हिंद, जय संविधान। मैं लगातार देख रहा हूं संविधान को हाथ में पकड़ करके नाटक करने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। संविधान को हाथ में पकड़ने से कुछ नहीं होता है। संविधान के अंदर में जो स्पिरिट है उसको समझना होगा। कि इस संविधान में Viewers, Rahul Gandhi's pledge to save the constitution is well known now. His outreach at an event in Nagpur has sparked controversy, with the BJP accusing Congress of fraudulently distributing blank notebooks disguised as the constitution. Pictures on your screen. This has raised questions about Congress's true commitment to upholding the constitutional values. Viewers, over the years, Congress has faced criticism for its handling of the constitutional principles. The party's actions have often been seen as contradictory to the values enshrined in the Constitution. For instance, think about this. The imposition of the emergency in 1975 that suspended fundamental rights and freedoms remains a dark chapter in India's democratic history. Rahul Gandhi's pledge to save the Constitution therefore appears hollow in light of Congress's past actions. The distribution of the blank notebooks with a red cover resembling the Constitution reinforces this notion that Congress's Save Constitution pitch is mere lip service. This symbolic gesture, viewers, undermines the gravity of the Constitution and the values it represents. The Constitution of India emphasizes fundamental duties, including respect for the Constitution, the national flag and the national anthem, as well as promoting harmony and women's empowerment. But Congress's actions have often been at odds with these principles. There are too many examples. The BJP's accusation of fraud is not an isolated incident, viewers. It highlights a pattern of behavior within the Congress that prioritizes political expediency over constitutional integrity. The party's attempt to politicize the Constitution and its values have eroded trust among the citizenry. The distribution of blank notebooks masquerading as the Constitution reinforces the perception that Congress's commitment to upholding the Constitution is superficial. To genuinely save the Constitution, political parties must demonstrate a genuine commitment to its principles and values rather than exploiting the Samvidhan as a political prop. भारताच्या संविधानाबद्दल राहुल गांधींची जी अनास्था काल पाहायला मिळाली आणि मी परवा जो आरोप केला होता तो खरा ठरला। ते लाल पुस्तक घेऊन या ठिकाणी संविधानाचा गौरव करू इच्छित नाही, तर त्यांच्या सोबत असलेले जे अर्बन नक्षल आहेत, त्यांच्या सोबत असलेले जे अनार्किस्ट आहेत, यांना एक प्रकारचा इशारा देण्याकरता किंवा त्यांची मदत घेण्याकरता भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान केला, संविधानाचा अपमान केला। आता त्यांच्या या नौटंकीला कोणीच भूलणार नाही। संविधान को हाथ में पकड़ने से कुछ नहीं होता है। संविधान के अंदर में जो स्पिरिट है उसको समझना होगा। इसलिए नागपुर में नीला रंग का छोड़ करके लाल रंग में संविधान का कवर पिक्चर डाल करके राहुल गांधी ने नकली संविधान बांटने का काम किया। कवर लगाया, कवर के नीचे में कुछ नहीं था, मुझे बताया गया है, वो कोरा कागज थे। These are the same people who opposed the Constitution of India for several decades. These are the same people who do not have even an iota of respect for the Constitution. And they are coming and saying this to us. These are the people who during the Lok Sabha election said that they will change the Constitution. We will not allow them to touch the Constitution. Right-wingers all over the world, and in India particular, they don't read and write. They believe in regressive policy. How come if the Constitution book is red and white and whatever it is, matter is content. भाजपा को अंबेडकर जी की संविधान लाल झंडे की तरह लगता है, उसकी नफरत करते हैं, उसको देखना नहीं चाहते, वो अपनी नजर से हटाना चाहते हैं।
अगर हल्लाल रंग अर्बन नक्सलाइट है तो क्या बजरंग बली भी है? उनकी लंगोट भी अर्बन नक्सलाइट की हो गई। You heard the reactions. Let's quickly open this up. Pradeep Bhandari, national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Suhail Seth needs no introduction. Karan Verma, political analyst. Khaliqur Rahman, political analyst. IP Singh, national spokesperson of the Samajwadi Party. Kishore Tiwari ji, spokesperson of the Shiv Sena Uddhav faction. Suhail, you know, as someone who knows a thing or two about marketing, perception, branding, what does this tell you? खाली किताब ले लीजिए, say whatever you want to. In this case, they distributed empty notebooks, or so is the charge by the BJP, and said that, look, we are taking pledge on the constitution. You know, Pranesh, I have a view here. Rahul Gandhi should stop behaving like a petulant child who wants to show everyone that, look, I've become an adult. He doesn't need to. You don't flash a constitution. You believe in it. You don't flash a book, you read it. You know, half the people in our country flash a book without reading it. It's much like the Harvard Business Review, which is carried in your hands, but no one reads it. But it looks very impressive. Oh, bhai, ye Harvard Business Review pad raha hai. Tell me, what do these people want to gain from this kind of stuff? This is optics of the worst kind. Now, whether the pages are blank or not, who was the first person in the Gandhi family who attempted to rewrite the constitution over and over again? His grandmother, Indira Gandhi. She, I've always said, was the greatest destroyer of every value that India held sacred. Ayaram Gayaram politics started with her. She tried to and did compromise the judiciary. Remember how Justice H.R. Khanna was superseded by Justice A.N. Ray? She imposed the emergency. Was the emergency not a violation of constitutional propriety? She then went on to demolish our banking system, our insurance system, license Raj. You know, Rahul Gandhi writes an article, Pranesh, my friend, in the Indian Express, bemoaning the demise of, industry fairness. You remember, you weren't born then, you're too young. People had to wait for 9 years for a Fiat. People had to wait for 3.5 years for a Vespa or a Chetak. Is this the person who's now talking about the constitution? "So chuhe kha ke billi haj ko chali." I mean, what kind of rubbish is this? And this is where, to my mind, Rahul Gandhi, to be fair, has been saying things which are pretty serious. This is where he faults. He should remain a serious politician rather than a politician who believes in waving optical illusions. किशोर तिवारी जी, ये किस तरह की राजनीति है कि आप संविधान के नाम पे खाली किताब दिखा रहे हैं? ये तो कांग्रेस की गारंटी की तरह है, और आप लोग अलायंस में, इंडिया अलायंस। सोहेल सेठ की मैं बात सुन रहा था, कितना खून, कितनी नफरत भरी है उनके बातों में। एक बात बता रहा हूं मैं कि ये जो है, ये सब कुछ मेरा आवाज सुने आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? प्रणेश, तेरे कार्यक्रम में ऐसा क्यों होता है? क्या हो रहा है सर? आपको आपकी आवाज आ रही है? अरे मुझे आपकी आवाज तो अच्छे से आती है, पर मेरे साथ, तुम्हारे साथ मुझे मेरी भी आवाज आ जाती है। ये आपकी आवाज इतनी बुलंद है कि आपको सुनाई दे रही है। चलिए, हम कोशिश करते हैं इसको ठीक करने की। हम ठीक कर रहे हैं जी, बोलिए। प्रणेश एक सिंबॉलिक तरीके से वो बता रहे थे, और ये कोई मसला नहीं बनता। वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। मुद्दा तो ये बनता कि सोहेल, मुद्दा तो ये बनता कि उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन ये हजारों साल पुरानी है। अब मुझे बताते कि मैं बाबा साहेब, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में इस सब्जेक्ट में LLM किया हूं, और कॉन्स्टिट्यूशन किस देश से कितनी ली है मैंने देखा। तो अब ये 1000 साल पुरानी है, तो हजारों साल पुरानी तो मनुस्मृति है, जिसको बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन बोल के लाना चाहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, वो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं जिंदगी जीने के अधिकार को। तो इस पर लोग जाग गए ना। वंचित लोग गए, दलित लोग है, आदिवासी लोग नहीं, है। किशोर जी, सब बात ठीक है। मैं बस लोगों के मन में यही प्रश्न है कि ये सारी बात आपकी ठीक है, लेकिन ये खाली किताब देख के उस पे प्लेज लेना कि मैं अब इस पे कसम खाता हूं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये ठीक बात है क्या? बताइए आप।
उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंबॉलिक किताब लेके चल रहे हैं वो। अच्छा। अब वो किताब के अंदर बीजेपी वाले घुस गए। कॉन्स्टिट्यूशन में तो घुसते नहीं, लेकिन किताब में घुस गए। किरण रिजिजू को कोई तो भी रिसर्च करके भेज दिया। अरे भैया, वो कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो रियल कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बता रहे हैं। प्रदीप भंडारी, डिड यू कम प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ अ काउंटर कि ये सिंबॉलिक है, आप इसको एम्प्टी सिंबलिज्म क्यों बोल रहे हैं? ये टोकनिज्म नहीं है, ये वो जो बोल रहे हैं आप भावनाओं को समझिए, छोड़ दीजिए बाकी सब। प्रणेश, मैं आपको राहुल गांधी जी की भावनाओं के बारे में बताना चाहता हूं। इट्स सेड दैट पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। My voice is echoing in my ears, Pranesh, if you can fix it, and Kishore Tiwari can know that only not his voice echoes, our voice also echoes. The show is fair, so Kishore ji should not worry. So let me thank you. Pranesh, let me show you a picture which is a very, very important picture of a symbolic gesture that Kishore Tiwari ji was speaking about. If you look at this, this was tweeted by the Congress party, and if the camera person can zoom a bit, this was tweeted in August 2024 by the official handle of the Congress party. Look where Rahul Gandhi is sitting, and look where they have kept Baba Saheb Bhimrao Ambedkar's picture. That is on the foot. That is on the foot and the legs of the Congress party. मतलब राहुल गांधी कुर्सी पे बैठे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जूतों के पास उनकी प्रतिमा को रखा है। आप अगर यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ, this is exactly how the Congress party treats the constitution and the constitution maker Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. So if symbolic gestures are to be spoken about, this is exactly the symbolic gesture that Rahul Gandhi and Congress party reflects. And this symbolic gesture is reflected in their statements also. This is why Rahul Gandhi says that he envisions an India where he does not want reservations and he wants to snatch the reservations. And at the same time, the letters written by the India Alliance leaders to the Mahavinash Aghadi, I'm talking about the Samajwadi Party MLA, who says that you should give separate reservation and separate budget to the minority community. So the intention of Rahul Gandhi and Congress is to disrespect Baba Saheb Bhimrao Ambedkar's constitution, to snatch the rights of the Dalit and give it to their vote bank. And I will prove you with one simple instance which has happened, an illustration which has happened in Telangana. If you look in what has happened in Telangana, is the minority budget has increased and the budgets for the Dalits have come down and the SC community has come down. So my charge is that the Congress party inherent is anti-Dalit. Right. This is why they opposed. So you believe this is part of a larger pattern. Let's bring in IP Singh ji. IP Singh ji, आज सवाल ये है, देखिए, आज सवाल ये है कि क्या ये ठीक बात है खाली नोटबुक दिखाना और बोलना सिंबॉलिक? ये रियल, व्हेन विल द कांग्रेस और पार्टीज ऑफ इंडिया अलायंस वॉक द टॉक? अखिलेश जी बोलते हैं जय संविधान, राहुल जी बोल रहे हैं जय संविधान। ऐसे बचेगा संविधान खाली नोटबुक दिखा के? बस प्रणेश जी, मैं दो छोटी छोटी वीडियो दिखाना चाहता हूं, और प्लीज मैं, जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी हाँ, दूसरा वीडियो ये दिखाना बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कथनी और करनी बीजेपी की क्या है वो देश को जानना बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी बातों पर कितना बतंगड़ खड़ा होता है। लेकिन जब आप बोलना क्या चाह रहे हैं आईपी सिंह जी, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? बोलिए, आप खुद इतना अच्छा बोलते हैं, आप वो बाइट क्यों चला रहे हैं, जो क्लिप क्यों चला रहे हैं? आप बोलिए ना। नहीं, मैं बोलना भी चाहता हूं, मैं दिखाना भी चाहता हूं। मुझे बहुत जरूरी हो गया है कि ये दो वीडियो आपको दिखा दें, क्योंकि इससे दूध का दूध, पानी का पानी। अच्छा, जब मिल जाए तब दिखा दीजिएगा, अभी ढूंढने में शो खत्म हो जाएगा। आईपी सिंह जी, अब बोल तो दीजिए जो मैंने जो सवाल पूछा है, बाद में दिखा दीजिएगा, कोई बात नहीं। ये तो आपको निकाल के आना चाहिए, ये भी आप सिंबलिज्म कर रहे हैं, ढूंढने में शो खत्म हो जाएगा, आप तब तक निकाल लीजिए, इट्स ओके। खलीकुर रहमान, what is this red notebook stunt by the Congress party? Is this how you will save the constitution?
See, you should try to understand the spirit behind it actually, because that's what Tiwari ji said, and I agree with Tiwari ji is this thing, because the red actually is a symbol which symbolizes the love, commitment, strength, and bravery. And this is a sacred color in our Hinduism. So if the BJP, who, thinks itself as the champion of the Hinduism, and if it is objecting to the red color, it is very shocking and surprising, and goes on to say they're double standards actually. So I think the BJP is rattled the way the Maharashtra elections are going, and it was the BJP, in fact, during the Lok Sabha election. Mr. Thalikur Rahman, let me just say this 1 minute. Let me just say that you are saying that, there is a script behind this symbolism. I don't know about the script, but look at what you've said. You're talking about, saluting the values of Hinduism. Should leaders and parties of India Alliance be talking about Sanatan, given what has been said about Sanatan, leprosy, AIDS, dengue, whatnot? No, so many invectives have been heard, sir. Then you talk about Sanatan? See, I think you are deviating yourself from reference to context here actually, because we are talking in context of what the BJP leader, Mr. Fadnavis, has raised. So I'm just, referring to that. And you are now trying to deviate it and take it to the Sanatan Dharma from here, actually. So I think instead of, deviating from the subject, let us stick to the subject and talk about the Constitution. Because talk about the Constitution. You could not even get a copy of the Constitution. You want to talk about the Constitution. You could not get a Constitution copy. Why is it so difficult to distribute copies of the Constitution? You distributed red notebooks, and now you're, giving us a lecture on the importance and symbolism of color red. Everyone is talking about now symbolism, symbolic. This is tokenism, sir. This is not symbolism. This is not tokenism, because there is a difference between tokenism and symbolism. Okay, I think, let me bring in Karan Verma. He'll tell you what this is. Karan, symbolism is the defense. No. Actually, Pranesh, the truth of the matter is that unfortunately there was a botch up at the end of the AICC volunteers, because the book they really wanted to bring about was not the Constitution. This empty book was actually the list of Rahul Gandhi's accomplishments. That is what the book was. Unfortunately, they botched it last minute and it came up with the cover of the Indian Constitution. So this is the reality what happened. Now they are trying to defend it. Anyways, let me tell you, Pranesh, the truth of the matter is that if there is any party that has actually assaulted the Constitution right from the First Amendment of Pandit Nehru, and ironically, Pandit Nehru lost his case to Organizer, the RSS magazine, and then he brought in, because he could not win against the RSS, he brought in the First Amendment, which is curtailing freedom of speech. So that is the reality. From there till 80 amendments, and not just amendments to the Constitution, going against the Supreme Court verdict, overturning it in the Shah Bano case. So that is the Congress party. Every symbol, every work along the path has been an affront to the Constitution of India. And what can be a bigger example, Pranesh, just today, for IP Singh, who was saying this is about social justice, or Kishore ji, आज ही के दिन इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में एक रेजोल्यूशन पास किया है इंडिया अलायंस ने टू रिस्टोर आर्टिकल 370. Can you imagine the same article 370 which had deprived Valmikis and the Dalit Samaj of reservation and so many other rights as far as voting or the prevention of atrocities against SC/ST Act, the same article 370 they are voting to bring in. तो किशोर जी, जब आप कहते हैं ना सामाजिक न्याय की बात है, या आईपी सिंह जी जो पीडीए की बात करते हैं, सामाजिक न्याय, बड़ा दलित विरोधी कोई काम नहीं हो सकता. It appears, and Suhail mentioned it in his opening remarks, it appears that everything is symbolism here. The poll promises are symbolism. The values that they say that we stand for, that is symbolism. Yes, Pradeep, what are you saying? Pranesh, the charge is serious. The charge is very important. Please understand the intention of the Congress party in Rahul Gandhi. They want to erase the Constitution of India and they want to get a family propriety. What Indira Gandhi did to the Constitution of India by imposing emergency, this blank book tells you that Rahul Gandhi can remove all the articles of the Constitution because he does not believe in democracy. This is why Rahul Gandhi says that he wants to snatch the reservation of the Dalit and give it to his vote bank.
So it is not mere symbolism. This is what Rahul Gandhi is telling. If his party comes to power, this is what he will do to the Constitution of India. Please remember, the intention of the Congress party is to divide this country. This is why they will ask for a caste census in the Hindus but not in the Muslims, because their intention is clear: divide the Indian society. Okay. And the first step to divide it is by demolish. So you are saying that the Congress wants to erase the Constitution. Now, before I get Mr. Kishore Tiwari to respond, Suhail, you know, when people say that, look, this is symbolic, nothing serious about this, don't get us wrong, there's no room for misinterpretation. How would you describe the imposition of emergency? What did that symbolize? Let me tell you, all this, symbolism, non-symbolism, tokenism is all rubbish. Let's get to reality. Rahul Gandhi is leader of India's opposition in the Lok Sabha. He's the leader of opposition. He's not some fly-by-night politician. He's also the Karta Dharta of the Congress party, whether you like it or not. Kharge is there as a mukhota. Kishore Tiwari, who I admire for his intellect, has forgotten that the person who was the founder of our founding father of our constitution himself uttered great dismay and actually resigned from parliament. And I would ask Kishore Tiwari to read Shashi Tharoor's book called Ambedkar, A Life. The problem in our country today, Pranesh, is no one is contextually conversant with history. So, jo bhi kaho chal jata hai, because no one has read. People are just doing tukkabazi. If Ambedkar was dismayed with the manner in which the constitution was being seen and being implemented, and as Karan and Pradeep both articulated, that the constitution's violations were primarily done under the Nehru-Gandhi regime. We are not blaming them. This is what happened. Shah Bano happened. You blame Modi for being anti-Muslim. Triple Talaq was done under Modi's regime. It wasn't done under Rajiv Gandhi. What did they do with industry and investment? You remember they took back Pranab Mukherjee, who then sadly became president. I say this with grave responsibility. He brought in a retrospective act, 1963, under which Vodafone and all these other companies had to suffer. So please do not tell us about the Constitution. It's important to walk the talk. Rahul Gandhi should walk the talk. First, he should do reparations for the destruction that was wreaked on the Constitution of India and through that on its citizens. The reparation apart, you keep showing a book. What kind of non-serious behavior is this? He's a serious politician. Serious politicians have to send out serious messages. They can't, you're not in school. Ki dekho, mere paas ek lal kitab hai. Dekho. And I don't even want to get into, Pranesh, whether the book is empty or not empty, whether it's unwritten or not written. The fact is, you are now playing with the Constitution and you're making it a plaything. You are therefore denigrating the Constitution. बताइए किशोर जी, ये बहुत ही गंभीर आरोप है आप पे. आप सिर्फ मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं. This is non-serious behavior. You are undermining the Constitution by doing this. देखिए, आपने मुझे पूछा. किशोर तिवारी तो आप ही. हाँ. हमारे पास ऐसा सिंबॉलिक जेस्ट नहीं है. एक हम पूरा जिस पे जो लिखते हैं वही होता है. अरे सोहेल ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, मैं अभी बता रहा हूं. दुनिया में मौसम बना है अब शहंशाहों का और तानाशाहों का. कल देखा तुमने, ट्रम्प चुन के आ गए. नहीं, एक बात बताइए किशोर तिवारी जी, शहंशाह तानाशाह, इंदिरा गांधी तानाशाह थी? देखो, इंदिरा जी की तुलना किसी से नहीं होती. नहीं, तुलना मत कीजिए. तानाशाह थी इंदिरा गांधी, तानाशाह थी. Was she a dictator? Yes or no? देखो, इंदिरा जी अगर तानाशाह होती तो चुनाव क्यों करा? तो इमरजेंसी क्यों लगा दिया? डेमोक्रेसी का क्लासिक एग्जाम्पल बताया था. नहीं, ये कौन सा डेमोक्रेटिक मॉडल है किशोर जी? आपने एलएलएम किया है. सुनिए, एलएलएम किया है. आप ये बताइए, इमरजेंसी इंपोज अगर किसी ने कर दिया तो वो तानाशाह हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने वो गलती थी, मान लिया वो गलती थी. और एक बात बताता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन भी कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस की है. कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, कांग्रेस. No, 1 minute. What did you say? The Congress introduced the Constitution. As the Congress, क्या बोल रहे किशोर तिवारी जी? देखिए, I understand that Maharashtra goes to polls, but you don't do this.
This is a disservice, sir. You are undermining the contributions of प्रणेश, our मुझे पूरा constitution बोलने makers. Don't do this, sir. प्रणेश मुझे बोलने देना। नहीं बोलिए, लेकिन आप ये क्या बोल रहे हैं? पहले 5 इलेक्शन, देखो सोहेल, पहले 5 इलेक्शन पूरी की पूरी कांग्रेस ही चुन के आती थी और कोई दूसरी पार्टी थी नहीं। मैं मेरी बात सुनो। दूसरी बात है, उन्होंने जो कोरी किताब कॉन्स्टिट्यूशन लिख के बताया, तो अब ये जैसे हमारे प्रदीप भंडारी है, इन्होंने पीछे किताबों का फ्लेक्स लगा के रखा। किताबों का फ्लेक्स लगा रखा इसलिए कि भाई वो किताबों का फ्लेक्स से ऐसा लगता है आपको कि वो इतना सारे किताबें वगैरह पढ़ते हैं। ये सब है ना, इनपुट सेल से जो आता है वही बोलते हैं। और कुछ भी बात करते हो। वो देखो, इनपुट सेल में आएगा किरण रिजिजू बोलेगा, इनपुट सेल में आएगा किशोर तिवारी जी। एक भी किताब कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं। Suhail said, what's behind you? What's the backdrop? आपके पीछे क्या? Have you kept books? What is in the backdrop? आपका फ्रेम कैसा, बता दीजिए किशोर तिवारी, lest you are accused of not reading anything. No, he is well read. People can read without understanding. People can read without comprehending. People can carry books without reading. That is our nature. Yeah, just like Rahul Gandhi showed the book, without it being the constitution. He must have been reading comics, Archie's comics. How do we know? IP Singh ji, इंदिरा गांधी तानाशाह थी? अब ये मत बोलिएगा सवाल क्या है। मैं अपनी बात कह नहीं पाया और नहीं, आप चले गए। आपातकाल लगा, ये तो सर्वविदित है और उस पर हम सब बात कर चुके हैं। सुन लीजिए, बात इस पे करनी पड़ेगी। किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं कि बीजेपी के नहीं, जो वो नेता शहंशाह और तानाशाह की बात पूर्व मुख्यमंत्री है पंडित देवेंद्र तिवारी जी, मैं फडणवीस, ये ऐसा नहीं हो सकता डिबेट पे। नहीं, 1 मिनट सर, 1 मिनट। इन द नेम ऑफ 1 मिनट सर, सुन लीजिए। इन द नेम ऑफ एक्सटेंडिंग रेस्पेक्ट एंड कर्टसी टू द गेस्ट, I can't allow a free run to, to gibberish. ऐसे मत कीजिए सर। I am asking you a question. किशोर तिवारी जी brought this up. He is talking about Trump's re-election. वो बोल रहे तानाशाह, शहनशाह। इंदिरा गांधी imposed emergency. Was she a dictator? Yes or no? सीधा सा सवाल है। उनको कहां कंपेयर कर रहे? एसपी सिंह जी, आप बोलो। आपका वो ऑडियो ही रह गया ना, वो वीडियो बता दो पर पहले। अरे उनको बोलने तो दीजिए किशोर जी, आप बिता दो वो वीडियो। बोलने दीजिए। एक सुनाया है, दूसरा नहीं सुनाया। क्या वो सुना दो पहले। बिल्कुल बोलने नहीं दे रहे। ये आपके सहयोगी हैं, मैं नहीं हूं। बोलिए IP सिंह। अरे आज ऐसा क्या हो गया प्रनेश जी, आप तो बिल्कुल बोलने नहीं दे रहे भाई। बोलिए, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं कुछ बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, सवाल यह है कि अब इंटरप्शन आता, फिर तिवारी जी को कॉल कर ली, इसलिए मैं अपनी बात कह नहीं पाया। कहने की बात यह है कि बीजेपी के पेट में इतना दर्द है कि पंडित देवेंद्र फडणवीस ने बहुत साफ तौर से बाबा साहब के संविधान की जो प्रति है उसके दिखाने पर उन्होंने कहा कि यह नक्सली विचार है, जातिगत जनगणना को नक्सली विचार वो बताते हैं। लेकिन बीजेपी संविधान था विचार है वो आप लोगों ने जो दिखाया वो संविधान कहां था? IP सिंह जी, सवाल तो वो है के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं। क्या कौन सा सवाल आप पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों ने संविधान दिखाया कहां? लाल किताब दिखा दी तो देवेंद्र फडणवीस तो उसके बारे में बोल रहे थे। अरे भाई, आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री की डिग्री पर कभी कोई चर्चा होती है क्या? जो डिग्री उनको यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग आपको भी पता है, उनकी डिग्री पर वी की जगह बी है। कभी आप चर्चा करते हैं क्या? तो आप चले जाइए, कोर्ट चले जाइए अगर आपको लगता है। चर्चा करते IP सिंह जी, केशव प्रसाद मौर्य के जो सर्टिफिकेट डिग्रियां, क्या आप उस पर चर्चा करते हैं? आपको देखिए, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लोगों को माफी मांगनी पड़ी है। आप जिसकी बात कर रहे हैं उनको कोर्ट से आदेश है माफी मांगने की। अगर आपको भी लगता है तो आप भी कोर्ट चले जाइए। आपसे मैंने संविधान पे सवाल पूछा, देखिए आप कहां चले गए। खलीकुर रहमान, let me tell you what happened during the emergency. More than 80,000 people were arrested. 34,000 were detained under MISA. उसके बाद 1984 एंटी-6 राइट्स हुआ।
All this is not dictatorial, sir. See, at that point of time, the situation in the country was such. Yeah, that you massacre the Sikhs. No, you are not allowing me to complete my sentence, and then you are. So that's the reason I think I prefer keeping my mouth shut rather than, because I say half sentence, then you interrupt. Mr. Rahman, that's the best. When you don't have anything to say, it's best to keep quiet. No. See, when I come for a debate, I come fully prepared, and I've been coming on your debate for the last so many years. Answer. I respect you, sir. Answer the question. No, I am ready to answer. But why are you? See, let me complete the sentence and let me complete my point of view. Then after that, I'm not trying to impose upon you that you should agree with whatever I say, because I am telling you that. Okay, sir. Make your point. Make your point. That's what it is. See, because today we are all talking about the Constitution and we are talking about safeguarding and protecting the Constitution. And now, in the BJP spokesperson and the entire BJP is very well trained to divert the attention of the people. Then suddenly they bring in the emergency. Suddenly they bring in some other subject because they don't want to debate on the Constitution. They don't want to talk about the Constitution because they want to shy away from the Constitution. That is the reason they try to bring in the emergency topic, because we have debated many times on emergency. But again, today you want to debate on the emergency, then let's have a separate debate on emergency. It's a separate debate. The moment, Suhail, Karan, the moment you bring in emergency, it becomes a separate debate. All those people who want to save Constitution, who chant Jai Samvidhan, suddenly go mum. You see, the point, Pranesh, is Mr. Rahman on your program started by saying, please be contextual. Here's the context. Rahul Gandhi today waves a red book saying India and Indians must believe in the Constitution. Fair. Does he ever say that his family in some measure was involved in desecrating the principles and the values and the ideas of the Constitution? He doesn't say that. Therefore, Mr. Rahman, if someone tells me that please follow this book, whereas his entire history has been replete with violations of that book, isn't it right for us to discuss it? Number one. Number two, all those people who take Ambedkar's name were the ones who abused him. There was a famous thing, I'm quoting from Shashi Tharoor, he's a Congress member. Look at his book and what happened with Ambedkar's disillusionment with Nehru and Gandhi. I'm only going, Mr. Rahman, based on history. You have to be contextual with what this country has been through. So it is important. You know where I disagree with you? When you bring about issues about Modi's degree. That is a separate debate. Today's debate by Pranesh is on, does Rahul Gandhi have the right to be preachy about the same Constitution that his family was involved in desecrating in a manner of speaking? That is the nub of the issue. That's the debate. You stick to this debate. Let me tell you, I have a lot of respect for Mulayam Singh ji and Akhilesh. Akhilesh, I could call him a friend of mine. Mulayam Singh ji has criticized Indira Gandhi. Balasaheb Thackeray, whose party today UBT Kishore Tiwari represents, has abused Indira Gandhi for the violations during the emergency. Then what right do you people have to support Rahul Gandhi on this? Political compulsions. What else? Karan Verma, these people who talk about Ambedkar, forget the insult, meted out to him. Unko Bharat Ratna kab diya? It was an afterthought. 1990. He was given Bharat Ratna in 1990, but Pranesh, ironically, किशोर जी ने कहा ये लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं. आपकी विंडो में जो 3 लोग हैं ऊपर, उन्होंने किताबें लिखी हुई है, नीचे किसी ने किताबें भी नहीं लिखी है. But you will never see us tom-tomming about it or talking down to someone that you've not read this, you've not read नहीं that. तो उन्होंने ये कहा कि पढ़ते नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि लिखे नहीं है. Give him that benefit of doubt. Book by its cover. नहीं, इन्होंने ये भी कहा जज अ बुक बाय इट्स कवर. अंदर खाली हो. अभी तक वी हैड रेड डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. ही इज सेइंग जज अ बुक बाय इट्स कवर. अंदर तो हम लोग खाली रखेंगे भाई. सो जस्ट लाइक कांग्रेसेस प्रॉमिसेस. एंड बाय द वे, किशोर जी ने कहा 5 बार तो पहले इन्हीं की सरकार थी. अरे 5 बार में आपने कितनी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को गिराया? आर्टिकल 356 का मिसयूज किया. कितने अमेंडमेंट्स लाए? योर इनग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ असॉल्ट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट सम्स अप द फर्स्ट 5 regimes, by the way. Leave aside 1975, every single regime, you've toppled elected governments, you've tried to bring in anti-defamation laws, you've brought in press acts,
MICA, MISA, आई मीन आपने क्या छोड़ी है कसर कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने में? ये तो सिंबलिज्म है प्रणेश की, खाली है कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा तो ये कब की मार चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये सिंबलिज्म नहीं है, ये दिस इज फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड this is subterfuge. 88 times the Congress imposed president's rule under Article 356. किशोर तिवारी जी, ये आई एम नॉट मेकिंग दिस अप. अब मेरे पीछे किताबें नहीं है, लेकिन मैं भी थोड़ा पढ़ के आता हूं सर, ऐसे मत कीजिए. ये देश में कुछ भी हो सकता है सोहेल. करण है ना, कोई किताब नहीं लिख के भी सोहेल वो ऑथर हो जाता है. और अब ये तुमने बोला ना लाल किताब, अब वो लाल कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं तो क्या नक्सल हो जाते हैं? कुछ तो भी बोलते हो आप. अरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ अच्छा और बुरा है वो कांग्रेस की देन है, और इसके लिए तो कांग्रेस की देन है. नहीं, एक मिनट, नहीं, कांग्रेस ने फेवर किया है कॉन्स्टिट्यूशन देके. कांग्रेस ने कैसे दे दिया? व्हाट डू यू मीन ये कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है? देखिए, आजादी के बाद कांग्रेस ने आजादी दिलाई है. किशोर जी, आजादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई है. अब तुम बोलोगे कि आरएसएस वालों ने दिलाई. नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं. मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए. नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं किशोर जी, कांग्रेस ने आजादी दिलाई है, बताइए. इतिहास तो इतिहास है. अब क्या तुम इतिहास में लिखोगे कि गोलकर गुरुजी ने आजादी दिलाई थी, तो मैं मान लूंगा. क्या नहीं, तो सावरकर ने आजादी नहीं दिलाई थी. सावरकर ने आजादी दिलाई थी, उनका कंट्रीब्यूशन था. कांग्रेस क्या विचार रखती है सावरकर के बारे में, ये भूल गए आप किशोर जी? देखो, मेरी बात सुनो. तुम आरएसएस के फाउंडर भी कांग्रेस. मैं आपसे सावरकर की बात कर रहा हूं, आप कहां चले गए? ये क्या हो गया आपको? आप सिर्फ आज सुहेल सेठ की बातों की जवाब दे रहे हैं, ऐसे क्यों? मैं प्रणय बोलता हूं. महात्मा गांधी जी ने जो कुछ लिखा है, तो महात्मा गांधी ने ये भी कहा था डिसबैंड द कांग्रेस. अरे भाई, महात्मा गांधी ने बोला था तो सुना कहां था जवाहरलाल नेहरू जी? अरे तो जवाहरलाल नेहरू कौन से पार्टी के थे? क्या बोल रहे किशोर जी आप? मतलब मैं क्या बोलूं सर, आप ना मैं ब्लैंक छोड़ दिया. मुझे बोलने देना, मुझे बोलने देना. आप बोलिए सर. ऊपर के ढकोसला वाले के लोगों को, पाखंड को अलग रखो. मैं बोल रहा हूँ, आप बोलिए. आप एलएलएम है, आप बोलिए. मैं बोल रहा हूँ ना, तुमको पूरा समझा देता हूँ. ये दुनिया की क्लासिक कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर समय लगा जब तक अमेंडमेंट हुए, और अमेंडमेंट करके उसको और रिफाइन किया गया. रिफाइन किया, इमरजेंसी लगा दिया. वो रोबस्टनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे कि इमरजेंसी के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन से देश बचता है कि नहीं. देखो प्रणय, किशोर जी, एक बात मैं पूरी ये लॉजिक के लिए आपको भी कुछ मिलना चाहिए, कोई पुरस्कार मिलना चाहिए. प्रणय के रिकॉर्ड पे जाने दो. नहीं, रिकॉर्ड पे नहीं सर, आज आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए किशोर जी. अब मुझे दूसरे डिबेट में जाने दीजिए. मुझे पूरा बोलने दो. नहीं, अब आपने पूरा कुछ छोड़ा ही नहीं, आपने सब बोल दिया. अरे एक पूरा बोलने दो. चलिए बोलिए. कि मेरे पिताजी भी जेल में थे और मैं भी इमरजेंसी में जेल में था. नहीं, तो किसने डाला? आपके पिताजी को जेल में आरएसएस ने डाला? नहीं, आरएसएस के वर्कर थे बोल के नासिक के जेल में 18 महीने रहे, और मैंने इमरजेंसी का विरोध किया, इसलिए अमरावती के जेल में रहा. आपने तो ऐसा विरोध किया, अभी आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं. ये तो आपका विरोध है. But anyways, we are moving on. I thank some of you for joining us on debate number 1. Viewers, let's move on.